श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। We have seen till shloka number 27.5. Arjun requested Bhagwan to take his chariot and place it in the middle of the two armies, and he also indicated that he wants to look around. देखना चाहता है कि कौन आया है मुझसे युद्ध करने, और उसमें there is a hidden attitude of little bit of this fear also. There's overconfidence on one side, and on the other side there is fear that who are there who I have to fight against. And he also goes to the extent of saying that all these people who have come to give up their lives for the sake of the son of Dhritarashtra, that is Duryodhana. And Bhagavan, as a very obedient charioteer, takes the chariot and places it in the middle of the two armies. But where? In front of Bhishma and Drona. And also shows Arjuna, हे पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुन. देखो यही लोग हैं. These are the ones who you have to fight against. So who did Arjuna see? He wanted to see Yodhukaman avasthitan drashtum ichham. I want to see the one who has come to fight. But what does he end up seeing? Acharyan, Matulan, Bhratran, Putran, Pautran, Sakimstata, Shashuran, Suradaschaiva, Senayor, Ubhayor. In both the armies, he saw relatives only. सब संबंधियों को देखा उसने योद्धाओं को नहीं देखा. And having seen this, seen all his relatives gathered there, कृपया परयाविष्टः, उसको आवेश हो गया. He was overcome with paraya कृपया, with great displaced compassion, misplaced compassion. It was not compassion, it was a lot of pity, but it was very misplaced pity. Paraya kripayavishtaha, extreme. So this kind of state he was in, Vishidan, and he was completely overcome with sorrow, extremely overwhelmed. Emotions are on a high. Vishidan, and very, very sad by looking at all these people. And he spoke. Arjuna spoke. अच्छा, क्या बोला? तो हम 2-3 श्लोक पढ़ते हैं अभी. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण
युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हे Krishna. Arjuna is addressing Bhagavan and saying, Hey Krishna, imam swajanam drishtva. Having seen all these relatives of mine, अपने स्वजनों को देखकर इस प्रकार, इन लोगों को यहां देखकर, इमम स्वजनम दृष्ट्वा, और कैसे हैं, who are these स्वजन? They are all not, they have not come here for attending a wedding or something. Yuyutsum samupasthitam, they have all gathered here for what? Yuyutsum, not for some celebration. युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं. They have all gathered here with a desire to fight a war. So they are all my relatives and they have all come here to fight with each other. And having seen these people, so what did he want to see? Warriors. What did he end up seeing? Relatives. But the fact that they have come to fight has not changed. So what he is seeing, the people he is seeing, he has recognized them as relatives. But they have come here to fight, that fact has not changed. So now relatives have come to fight with each other. This is what he is seeing. And having seen that, now Arjuna is talking to the divine doctor. Because a patient, when the patient goes to the doctor, वो डॉक्टर क्या कहते हैं? सीधा डॉक्टर बोलने लगते हैं? नहीं, आयुर्वेद में ऐसा होता है. आयुर्वेद में बोलते तुम मत बोलो, मैं बोलूंगा पहले. तो आयुर्वेद में वो पहले नाड़ी चेक करते, फिर बोलते हैं, लिख के बोले ये सब सही है. हाँ, आपको कैसे पता चला? आपने बताया. कैसे? नाड़ी से बताया. आजकल मुंह से सुनते हैं. हाँ, बोलो क्या है, क्या हुआ, क्यों आए, what is your problem, tell me your symptoms. And if you go to a psychiatrist, they charge you for just talking to them. They listen to you. I don't know whether they are listening or hearing, that I don't know, but वो बिठाएंगे सोफे पे, बोलो. हाँ, 1 घंटा हो गया, इतना पैसा दो, जाओ. क्यों? बोलने का पैसा. क्यों? वी आर ओनली टेलिंग देम द सिम्टम्स. मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है. फिर वो थोड़ा 2 मिनट कुछ कुछ बोलेंगे. अच्छा, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, बस जाओ, हो गया. हाँ, तो पहले पेशेंट बोलता है, बताता है अपना सिम्टम. तो यहाँ पर we saw na Arjuna disease. So that Arjuna, who is suffering from this disease, is now presenting his case to Bhagwan Shri Krishna. He is saying, क्या हो रहा है मुझे? This is very interesting description. Sidanti mama gatrani. Mama gatrani sidanti. Gatrani means my limbs. My limbs are sidanti. They are,
अभी लूजन अप हो गए हैं, हाँ, सीदंती मतलब आई कांट डू एनीथिंग विथ माय लिम्स, दे हैव लूजनड अप कंप्लीटली। मुखम च परिशुष्यति, माय माउथ इज पाच्ड, मुंह सूख रहा है। अच्छा, देन व्हाट इज हैपनिंग? वेपथुश्च शरीरे में, देर इज ट्रेम्बलिंग इन द बॉडी, कंपन हो रहा है शरीर में। रोम हर्षश्च जायते, हेयर स्टैंडिंग ऑन देयर हैंड एंड, हॉरिपुलेशंस हो रहे हैं मुझे। अच्छा, नॉट ओनली दैट, अर्जुन, वो उसकी शोभा ही वो थी, गांडीव, उसका धनुष्य, हिज बो कॉल्ड गांडीव, दैट गांडीव इज स्लिपिंग ऑफ फ्रॉम माय हैंड्स। गांडीवम श्रमसते हस्तात्, आई एम नॉट एबल टू होल्ड माय वेपन इन माय हैंड। त्वक्चैव परिदह्यते, देयर इज अ बर्निंग सेंसेशन इन माय बॉडी, माय स्किन इज बर्निंग, मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है। अच्छा, न च शक्नोमि अवस्थातुम, मैं खड़े नहीं रह पा रहा, आई एम नॉट एबल टू कीप स्टैंडिंग हियर, बिकॉज अ वॉरियर हैज टू स्टैंड एंड फाइट, ही कैन नॉट सिट के हाँ चलो नेक्स्ट, हाँ गो नेक्स्ट, ऐसे थोड़ी करेगा, उसको खड़े होके करना पड़ेगा। हाँ, तो खड़ा नहीं रहा जा रहा है, आई एम नॉट एबल टू कीप स्टैंडिंग, न च शक्नोमि अवस्थातुम, आई एम लूजिंग माय बैलेंस, भ्रमति वच मे मनः, मन चकरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो, भ्रमति वच मे मनः। अच्छा, इतना ही नहीं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, आई एम सीइंग ऑल बैड ओमेन्स, विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि, अपशकुन दिख रहा है मुझे सब कुछ। अच्छा, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, killing my own relatives, I am not seeing anything good that is going to happen by killing my own relatives. न च श्रेयः अनुपश्यामि, आई डोंट सी एनीथिंग गुड, कुछ भला होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है अपने ही स्वजनों को मारने में। नाउ दिस इज हिज कंडीशन। ठीक है, मैं यूजुअली कहता हूं कि फोन को साइलेंट पे डालो, साइलेंट पे ही रखो, पर आप फोन निकालो आज, टेक योर फोन आउट, ओपन गूगल, ओके, एंड सर्च एंजाइटी न्यूरोसिस और एंजाइटी स्टेट न्यूरोसिस सिम्टम्स, ऐसा सर्च करो आप, एंजाइटी न्यूरोसिस, NEUROSIS, एंजाइटी न्यूरोसिस सिम्टम्स, एंड सर्च, okay, whatever comes in the beginning, okay, I have also done that, I am going to read that out, okay. People may experience whole body fatigue, restlessness, sweating, cognitive, lack of concentration, racing thoughts or unwanted thoughts, behavioral, hypervigilance or irritability, and commonly seen anxiety, excessive worry, fear, feeling of impending doom, insomnia, nausea, palpitations, and trembling. It is not in front, I am not reading, it is on your phone also. Okay? Exact description. In one of the classes, SC Gita class में, I had requested one of our students was a psychologist. तो मैंने उनको ऐसे, उनको पता नहीं था, आई जस्ट सेड अच्छा एंजाइटी स्टेट न्यूरोसिस का मुझे सिम्टम्स लिख के देना मुझे जरा, तो शी चेक्ड, पूरा लिखा, लिख के, शी डिडंट नो व्हाई आई एम आस्किंग, वो मैंने साइड में रखा, फिर ये लिया, उसके बाद फिर मैं बोला पढ़ो आके, एग्जैक्टली से दिस इज द डिजीज अर्जुन इज गोइंग थ्रू। एंड आज उसको एक वर्ड में बोलते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेस। दिस इज द सेम थिंग।
In one word, this is called stress. क्या हो रहा है? All these things happen. Sometimes some symptoms are very, very pronounced. I can see, experience them. Sometimes I don't know that they exist. Sometimes they are very, they don't express so much. But ये सब होता है. एंड जो ये कॉग्निटिव और बिहेवियरल जो चीज होती है हमारे इस सी अनवांटेड थॉट्स racing through the mind. If you look at it, what kind of thoughts? Now here, see, each and every symptom, if you see, सीदंती मम गात्र, मेरे सारे शरीर के अंग अंग सब शिथिल हो गए हैं. My limbs are loosened up completely. So no strength, no ability to even stand. That is the condition. When we are in extreme stress, don't we experience this? Vepathuscha sharire mein, trembling. We find trembling happening where we all have experience. Sweating, पूरा पसीना छूट रहा है. वेपथुश्च शरीरे में. रोमहर्षश्च जायते, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इमोशन होता है तो हॉरिपुलेशंस आल्सो हैपन. I am not able to hold anything firmly. हाथ कांपते हैं. I am not able, something that I am used to doing every day. कोई लेखक होगा वो पेन पकड़ नहीं पाएगा, वो फोन हाथ में नहीं रह पाएगा. He'll start trembling. Our own instruments we are not able to use. त्वच्चैव परिदह्यते. There is a burning sensation. I'm very uncomfortable. There's restlessness in me. And खड़ा नहीं रहा जाता, बैलेंस छूट रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है. न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव मे मनः. माय माइंड इज जस्ट वेरी रेस्टलेस. इसीलिए चक्कर आ रहे हैं मुझे. और ये तो चलो फिजिकल कुछ चीजें दिख रही हैं. आई एम सीइंग बैड ओमेन्स. हु इज स्पीकिंग? अर्जुन. Such an intelligent, well educated person. और उस जमाने का यूथ था वो. Youth talking about अपशकुन. Now we can understand what gravity of the disease. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. मुझे विपरीत सारे निमित्त दिखाई दे रहे हैं. मुझे, हम निकले थे तभी मुझे लगा वो बिल्ली रास्ता काट गई थी. पूरा जीवन आज तक बिल्ली को चिंता करना पड़ा कि मैं इसके रास्ता काट के आई हूं, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है. और आज तुझे चिंता हो रही है, क्यों? इफ यू लुक एट इट, व्हाट काइंड ऑफ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. इंटेलिजेंट मैन ऑफ एक्शन टॉकिंग अबाउट अपशकुन, बैड ओमेन्स. मतलब, और हम ये शकुन शास्त्र वगैरह कितना कितना जानते हैं हम शकुन शास्त्र के बारे में, कितना है हमको. जब हमें कुछ जो वॉट एवर वी लाइक, इफ यू वांट टू डू, or we value something we want to do, that time will we sit and think about apshakun and all? We are rushing to reach some place where we want to go actually, and then we say बिल्ली रास्ता काट गई. तो रुकते हैं? तब तो नहीं रुकेंगे. पर अभी आज सडनली अपशकुन का विचार क्यों आ गया? माइंड इज वीक. एंड माइंड, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, देयर इज फियर. ये मुझे नहीं करना है. और जब नहीं करना है तो 10 बहाने होते हैं. whether it is children or elders, adults, if we look at it, if we see, we also ask for reasons, na? We say, oh, why do we light the lamp? Why do you have to go to the temple? Why do you have to put tilak on your forehead? Why do? And we say, oh, so intelligent child or adult, whoever it may be, so intelligent youngster, देखो प्रश्न पूछ रहा है जानने के लिए. Very good. No doubt about it. It is very good, very intelligent of that child. And सवाल उठाना बहुत अच्छी बात है, समझने का प्रयास करना अच्छी बात है. पर क्या हम हर मामले में सवाल उठाते हैं? How many youngsters have asked, why do we blow out candles on a birthday? How many youngsters have asked, why do we cut the cake on a birthday? It is also a ritual. पर वो तो पूछते नहीं है. Why?
ये तो अधूरा इंटेलिजेंस हो गया. So bad omens also, we will not believe in omens and all usually, but when my mind is weak and when I don't want to do something, there is some fear, there is some aversion, then immediately I say, no, 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 this is bad omens. No, suddenly, when we go out and we don't want to go out, suddenly वो बादल आ जाते हैं and then it becomes cloudy ना. आई थिंक भगवान की आज इच्छा नहीं है कि हम बाहर जाए. अरे मेरी इच्छा नहीं हो रही है. God doesn't want me to go. That is why suddenly, see, it has become cloudy. And if I want to go, and if the same thing happens, see, Bhagwan wants me to go out. That is why he's made shade, for me, so that I can go without the sun. Ha ha ha. Interpretation. Kyo? As per my convenience, as I like. Nimittani cha pashyami viparitani keshava. पर शगुन शास्त्र सुन समझ very it is a science by itself. I don't say we should get psyched by it, but it is a science. There are some observations made over generations and then these things are देख के ये coincidences हुए हैं यानी they are interrelated. Some kind of observations have happened. तो उसकी वजह से traditions हैं जो उसको मानते हैं. ठीक है, no problem. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली कैसे कैसे वो शुभ शकुन होता है, अपशकुन होता है, ये सब के बारे में रामचरितमानस में जगह जगह पर ये सब भी दिया हुआ है. वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसा हुआ, ये हुआ, इसको ये अच्छा बोला, इसको बोला बुरा है, इसको बोला ये ठीक है, ये बोले ठीक नहीं है. इंटरेस्टिंग. तो क्या अर्जुन एट द बैटल फील्ड वॉज वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स? एक कौवा उड़ के गया, मैंने देखा. कौवा इज फ्लाइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अपशकुन है. हाँ, तो वेस्ट टू ईस्ट होता तो तुमको पता भी है कौन सी दिशा कौन कहाँ है. निमित्तानि च पश्यामि. वी ऑल्सो बिकम लाइक दिस व्हेन वी आर वीक. कभी कभी वी आर सिटिंग टू ईट एंड देन समवन इन द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रन समटाइम्स डू दिस, कि द फादर और द मदर हुएवर इज स्ट्रिक्ट, वो पूछते हैं इस समय पे तुम क्या कर रहे थे, या स्कूल में तुमने आज क्या किया, कुछ हुआ होगा. तो विल नॉट रिप्लाई. क्यों? आप इन्हें तो खाते वक्त बोलने को मना किया है. तो आज ना है तुमको. हाँ, तो हो all your life you have never listened to this. You keep on chatting away all the time, and today when I want you to speak, you are saying I won't speak because you have asked me not to. क्यों? क्योंकि this time I don't want to speak. You have to understand, this is the psychology. Why? Because it is out of extreme stress. And what is stress? If we have to simplify stress, we saw this stress in Duryodhan's case also. He was also under stress. He was just blabbering away. But ये इतना symptoms का detail दिया नहीं गया था. पर उसको भी हो रहा होगा ये सब, इसीलिए वो ऐसे कुछ भी बोल रहा है. तो यहाँ पर इसकी भी हालत खराब है. तो अभी क्या देख रहा है, ये कमजोरी दिख रही है. स्ट्रेस. अब स्ट्रेस यदि आज के जीवन में हमको डिफाइन करना हो, व्हाट इज स्ट्रेस? तो इफ वी हैव टू पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज स्ट्रेस. आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज देयर. जो भी हो, मेरी परिस्थिति हो, मेरे परिवार की स्थिति हो, मेरे दुनिया में, आसपास के समाज में, मेरे जीवन में जो चल रहा है, even sometimes my own actions, my own thoughts, I am not able to accept. And that non-acceptance creates some pressure, which we call it stress. Now, what is the very, very, natural way of dealing with stress that we have? It is not called dealing, but if we have to, when we are in face to face some situation which are not able to accept, first thing that comes to mind is chicken out, भाग जाओ. तो just want to escape, get out of that situation. I don't want this, so I am out of it. This is the first. And if we find that there is no way out, then suddenly that stress and fear suddenly expresses as aggression. It looks like arrogance, but it is actually fear which looks like arrogance. वो अचानक हम our shape grows,
And this animals do it and we study animals, but हम में होता है तो हमको समझ में नहीं आता. एनिमल्स प्रेडेटर से बचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, उसमें एक ये भी है, दे ग्रो. इफ यू हैव सीन अ कैट विच इज वेरी अफ्रेड समटाइम, कोई कुत्ता है वो डर लग रहा है, तो उसको देखना चाहिए बिल्ली को. उसके सारे शरीर के बाल खड़े हो जाएंगे, उसकी पूंछ खड़ी हो जाएगी, वो पूरा ऐसे होके खड़ा हो जाएगा. स्टॉप. Which means it wants to appear bigger than what it really is. वो प्रेडेटर से बचने की बात है. हम सिचुएशन से भी ये करते हैं. हाँ, अचानक बॉडी लैंग्वेज में भी हो जाता है, और मुझे करना है कुछ. तो the first response that we have to stress naturally is flight and other is fight. We won't resolve it. Either flight मतलब भाग जाओ, या तो फाइट मतलब उसके साथ जूझते रहो, स्ट्रगल अगेंस्ट इट, बट यू विल नेवर रिजॉल्व इट. तो वो रहेगा, बना रहेगा. सो इफ वी लुक एट, देयर इज आवर ओन हैंड. इफ वी पुश, लेट अस से आई वांट टू पुश माय दिस हैंड this way, okay, and I stop it with the other hand, okay. So there is some pressure applied in this direction by this hand, okay, and I'm just stopping it, okay. Now if I want to nullify this pressure, what should I do? As much as I resist, the pressure will keep building up. हाँ? इसको छोड़ दें या इसको ढीला कर दें, तो this will also die down, क्योंकि वो कितना धकेलेगा, खत्म हो गया. बट वो रेजिस्ट करना, फाइट करना, या तो भाग जाओ पूरी तरह से, उसको दूर हट के भाग जाओ, एंड वी फील दैट इट इज रिजॉल्व्ड, बट इट डजंट रिजॉल्व. बोथ वेज वी आर एक्चुअली मेंटेनिंग इट, कीपिंग इट देयर. समटाइम्स वी से आई वांट टू जस्ट स्लीप. गुड, स्लीपिंग आल्सो इज कैन बी अ सॉल्यूशन, बट इट इज अ वेरी टेम्पररी सॉल्यूशन. फॉर सम टाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, दैट्स ऑल. बट ऐसे सिचुएशन में नींद भी तो नहीं आती. We are not able to sleep also. So extreme, that's insomnia, one of the symptoms. So can't sleep also. What to do? And we wish we can sleep. फिर लोग गोलियां लेते हो, गोली खाने से कभी नींद नहीं आती, जबरदस्ती नहीं आती, वो माइंड इतना एक्टिव होता है कि नहीं होता. तो अर्जुना is in that anxiety state, neurosis, breaking down. And he himself is telling the story of his breakdown. कि ऐसा ऐसा ऐसा. And if we find the symptoms are also in a chronological order. ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है. And then as it progresses, at one point, you can't withhold anymore. So this is what we are going to see. So the point is, here Arjuna is expressing his symptoms. Looking at, and what is the thing? What is the cause of this? Cause is not some, external kuch nahi hai. Only his way of looking at the situation has created this. What he wanted to see was warriors. He ended up seeing relatives. उसकी वजह से ये stress build up हुआ है. मतलब हमारे जीवन में जितना भी stress है, who is responsible for it? Huh? Is it the situation? The situation. See, we all know after Gita what happened? The war took place, right? Arjuna had to fight, right? After Gita also. Who is the teacher of Bhagavad Gita? Bhagwan. If Bhagwan wanted, he could have changed the situation. He could have changed everything. He could have suddenly entered the heart of Bhishma and Drona and said, chalo, come this side. Khel khatam. He could have entered the heart of Duryodhana and said, tu acha ho ja. He could have changed the external situation. It was possible. For Bhagwan, it was possible, right? Did he? What did he do instead? Empowered Arjuna. Gave him the right knowledge. And that right knowledge to be able to see rightly. The right vision was imparted. And when the right vision came, that was all that was required. Arjuna was capable of fighting and winning.
Same way, we also in our life are capable of facing the situations and come out victorious. We have the ability in us. What is missing, or sometimes what goes amiss, is our way of looking at the situation. In a battlefield, if I start looking at relatives, then this is what will happen. All these symptoms. And whenever we find any one of these symptoms, कभी भी हमारा मन कभी कमजोर होता दिखता है, हमारे शरीर में कुछ दिखता है, immediately वो घंटी बजनी चाहिए. There should be an alarm. What is faulty in my vision? What am I seeing? What did I want to see and what I have ended up seeing? ये अर्जुन की गति मेरी कहां से हो गई? If I can recognize that, I have won the game. उस जगह पे ही मेरा स्ट्रेस से मुक्ति हो जाएगी. It is possible. Just by correcting our way of looking at things. And sometimes that way of looking at things is so naturally happens that we don't even notice that हमसे ये गलती हुई है. We don't notice. And we are finding, suddenly, why am I feeling irritable? See, irritability also we saw, one of the symptoms. Suddenly we feel irritable. Why am I feeling irritable? What is it? सब पे गुस्सा कर रहे हैं हम. वो फोन बजता है, अरे क्या इसको बजना था, अभी बजना था. फोन पे गुस्सा कर रहे हैं. वो फ्रिज का दरवाजा बंद हो रहा है, उसमें आवाज है, अरे इसको इतना आवाज क्यों करने की जरूरत है. अरे पर रोज आती है ये आवाज तुम्हें. वो बच्चा आके कोई सवाल, अरे बार बार तुम सवाल क्यों पूछते रहते हो. अरे बच्चा तुमसे नहीं पूछेगा तो पड़ोसी से थोड़ी पूछेगा. सब पे चिढ़ना शुरू हो जाता. वी बिकम सो इरिटेबल एट टाइम. वी हैव टू थिंक, व्हाट इज इट दैट आई एम नॉट एबल टू सी, और व्हाट इज इट आई एम सीइंग रॉन्गली. वेयर आई एम सीइंग रिलेटिव्स इंस्टेड ऑफ वॉरियर्स, समवेयर आई एम सीइंग दैट. वो अर्जुना डिजीज का कॉज यदि हम पकड़ लें उसको और उसकी धीरे धीरे आदत डालें, we have to train our mind, and there at that point, if we can save ourselves. So that is why that imparting the right vision is important. पर भगवान फेल्ट कि अभी इस स्टेज पे भी अगर कुछ को बोल दें उसको कुछ, तो वो superficially he will be okay, but after some time again he will land up in this. This is how we also do. Stress होता है तो we go and watch a movie. That is symptomatic treatment, temporary. चलो थोड़ा relax हो गया, I am now relaxed, now I am better. Or we go shopping. Oh चलो weekend पे चलो we'll go on a trek, थोड़ा fresh होना है. पर हो रहा है, the main चीज is not addressed. तो भगवान is not doing any such symptomatic treatment. He is not doing any plastering work. वो बोले वो तो गहराई में जाने दो, let us go to the cause. And he will himself, वो उगलेगा, वो उगलता है. कितना टाइम लगता है, फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाता है, सेकेंड चैप्टर के 6th वर्स में जाके वो उगलता है उसका रियल प्रॉब्लम. एंड भगवान इज पेशेंट. ओके, भगवान इज being patient with Arjuna. We have to be patient with ourselves. That is a difference. वो अपने आप से भी धैर्य नहीं होता है. We are sometimes so impatient. I want to change today. But the habits are so old. It will take its own time. I have to be patient with myself also and put in the right kind of effort and keep doing it. Stress. I feel stress. क्या करें? And then they will say, हम प्राणायाम करते. Can you teach meditation? Why? Because I have a lot of stress. But if you have stress, how will you meditate? No, but is meditation not a cure for stress? No. Free from stress only, you can go to a state called meditation. Otherwise, how will you? वो मेडिटेशन कोई ऐसे थोड़ी है कि कोई वो डॉक्टर की दवाई है, कैप्सूल है, चलो आधा घंटा मेडिटेट करो सारा स्ट्रेस चला जाएगा जीवन का. नहीं तो प्राणायाम करते लोग, फीलिंग गुड. हाउ मच? 10 minutes. आफ्टर दैट, क्योंकि वो है, द सिचुएशन हैज नॉट चेंज्ड.
and it is not going to change, and we expect suddenly 2-4 सांस क्या ले लिया, मुझे लगता है सिचुएशन बदल जाएगा. सांस लेने से सांस को बदलना चाहते हैं. ऐसे थोड़ी होता है. तो ये all these different kinds of techniques and all, it may temporarily help, and they are not waste. Sometimes I'm going out for a walk. Why? थोड़ा फ्रेश होना है, बहुत स्ट्रेसफुल है एनवायरनमेंट, अब बाहर जा रहा हूँ मैं. और लोग ऐसे इसी को बहाना बना के दे गो इनटू ऑल अनहेल्दी हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब, और लगता है कि उससे बाहर निकल रहे हैं, बट नथिंग इज हैपनिंग. Only our health is getting spoiled. Nothing else is happening. Why? Because the situation and my vision both are the same. And the situation I cannot change, but the vision I can change. But I'm not working on it. I want to just forget. That forgetful anyway we are. कितना हमको क्या याद है, हमने गलतियां की, वो सब याद है हमको. अगर याद होती तो दोबारा हम दोहराते नहीं उसको. So we are forgetful by nature. So we have to know what to forget and what to remember. That's all. Otherwise, forgetting we know very well. Bhagavad Gita, how many shloks we remember? Oh, I had memorized, but now I forgot. See? So capacity is there to forget. It only has to be employed in the right areas. That's all. बट वो फॉरगेट करने से वो बदल जाएगा ऐसा थोड़ी है. विजन तो वही रहने वाला है. तो अर्जुना हियर इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट दैट ही सॉ रिलेटिव्स इन प्लेस ऑफ सोल्जर्स. बस दैट वाज हिज प्रॉब्लम. आई ऑल्सो सी दैट रिलेटिव इज वेयर आई एम देयर. Relatives, किसके relatives? My relatives. That my aspect is there, so I am there. Soldier, objective. He is a soldier, irrespective of me. So when I get connected to the situation, that is called attachment. I, my. And when there is my, then I want something there in that situation. So that's why I don't want to kill them. That is why he says, Nacha Shreyonu Pashyami Hatva Swajana Mahave. By killing our own family members, I don't see anything good happening. The same Arjun, maybe about half an hour before this, if somebody would have told him, why are you fighting against your brothers? What would he have said? Just half an hour before what he spoke now. उसने क्या बोला होता? पहले उसको बाण मार देता. तुम्हारी हिम्मत, वो मेरे भाई नहीं है. They are not my brothers. They are not my relative. But now, suddenly, why? Because inability to face the situation. Same issue that Duryodhan faced. Here there is greater detailed description of Arjuna's state, but Duryodhan also suddenly saw, oh, such a big army, and now Arjun also is coming to the realize that such a huge war and so much of destruction, and majority is my own family, such a huge family. तो इसमें 80% तो उनके फैमिली के लोग होंगे, शायद 70% होंगे, शायद 105 तो वही लोग भाई हैं. तो इतनी बड़ी फैमिली. That's when he realized the magnitude. I can't do this. तो ये because of some cause something happens, and that something leads to something, and then that something I want to cure directly, but it is not possible. We have to go to the root cause. So we are spending so much time only in these symptoms just to drive home this point that we can help ourselves in such a situation. It is possible.
We say, no, we don't have Sri Krishna to help us, but Sri Krishna has already helped us. He has given entire Bhagavad Gita, already he has given. Arjuna to got when he was in that situation. I already have it before I enter that situation. So I am better equipped than Arjuna is. अच्छा श्रेयोनुपश्यम. Now श्रेय, ये श्रेय word को भी थोड़ा समझना चाहिए, only then we'll understand the further thing also. See, श्रेय word means well-being. Well-being of what? Well-being of everyone at all levels. Supreme well-being, that is called Shreya, in simple terms. Puja Gurudev used to call Shreya as that which is good, as against the other option that is called prayer, or that which is pleasant, that which is conducive, that which feels, that feel good and real good are two different things. I feel good with this. That's pleasurable. So that is a pleasant. And Shreya here is the good, means well-being of everybody at all levels. And the supreme well-being is realizing our true nature, being totally free, liberated from all sorts of bondages. That is the supreme well-being, moksha. So, Shreya, I don't see anything good. मतलब किसी का भला नहीं हो रहा है. Hatva swajana mahave. This statement, is it right or wrong? Killing one's own family members, nothing good is going to happen. I don't say anything good. Is this correct or wrong statement? As a statement? As a statement, it is right. हाँ, अपने फैमिली को मार के किसका भला होने वाला है? नहीं होगा. वो तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है. तो अर्जुन ने ये कहा, इसमें क्या गलती है? नहीं है, इस बात में तो कोई गलती नहीं है. हाँ, बट द पॉइंट इज, ये स्वजन है. क्वेश्चन तो वहां है, आर दीज रिलेटिव्स? Now that are these relatives question also has to be examined from different levels. Are these relatives means the point is, मेरे साथ उनका संबंध जो है, is that their primary identity today? Have they come here as my relatives? No. So स्वजन तो है ही नहीं, पहली बात. दूसरी बात, चलो आज तक have they been relatives? Have they behaved like relatives? Majority of them no. So neither they are relatives, nor I have invited them as relatives, nor have both of us gathered as relatives. तो अभी कहां से ये अचानक? तो the statement is true, but are these people relatives? No. तो न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे. हाँ, ये तो उसने कंक्लूजन दे दिया, बट ये एग्जामिन नहीं किया कि ये जो टेक्निकली स्पीकिंग जो भी टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन में यूज होता है, वो टर्मिनोलॉजी भी ठीक से डिफाइन होनी चाहिए. इसीलिए लीगल डॉक्यूमेंट्स एक सेंटेंस बोलने के लिए एक बुक पकड़ाएंगे आपको कि ये पूरा पढ़ो. क्यों? क्योंकि वो एक टर्मिनोलॉजी को फिर से डिफाइन करेंगे. फिर उसमें भी बोलेंगे कि दिस इज this but not limited to only this, and it is also, this also can mean this but only this but not beyond this. अरे पर इतनी बार इतना this बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, that only then unambiguity is important. तो यहां पर स्वजन, डिफाइन स्वजन. कौन है स्वजन? Just by accident of birth in your own family they become स्वजन. आज अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा लॉसूट्स जो हैं कोर्ट्स में, ये सो कॉल्ड स्वजनों के ओर से ही होता है ज्यादातर. देखो, तो एज अ स्टेटमेंट यस, बट देन सो वी ऑल्सो मेक सच स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफिकेशंस फॉर आवर ओन एक्शंस, आवर ओन थॉट्स. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग, एग्जामिन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी मीन, कि ये क्या है. इज इट रियली सो? न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे. अच्छा, आगे ही सेइंग
This is also again very interesting thought. See, the thought is, it is not um, Arjuna's expressions. He is expressing as though this is the right thing. But if we little bit think about it, we understand that इसमें बहुत सारे flaws हैं. So we'll see. Next one is very important thought that Arjuna is expressed here. Shloka number 32. Nakangshe vijayam Krishna न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा. He is saying, hey Krishna, na kangshe vijayam. I don't seek victory. I don't want to win. Like I am not running after victory. ना कांक्षे विजय. मुझे जीतने की कोई इच्छा है ऐसा मत सोचना. मुझे कोई जीतने की कोई इच्छा नहीं. न च राज्यम सुखानि च, nor am I seeking the pleasures of the kingdom. That also I am not running after that also. अच्छा. किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर जीविते न वा. ये राज्य का क्या मतलब, क्या ये भोग विलास, ये सब, व्हाट इज ऑल दिस इंडल्जेंस इन प्लेजर्स एंड ऑल, व्हाट इज दिस किंगशिप एंड ऑल, एंड व्हाट इज दिस लाइफ, सो टेम्पररी, फ्लीटिंग, एवर चेंजिंग, व्हाट इज द यूज. आई डोंट रन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स. ओ रियली? अच्छा. नाउ ये स्टेटमेंट, न कांक्षे विजयम कृष्ण. हे कृष्ण, अहम विजयम न कांक्षे. आई डोंट वांट विक्ट्री. आई एम नॉट सीकिंग विक्ट्री. Oh, अच्छा, okay. Then why have you come to fight? That's why I am saying I don't want to fight. But you prepared for this battle. You prepared for this war for 13 long years. You have prepared. Why? हारने के लिए. इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना है. See, there are some people, now let us not talk war scenario because we may not be able to relate to it, but games we have played, right? Games we have played, indoor games, outdoor games, वीडियो गेम्स, कोई भी गेम हो, हम सब ने गेम तो खेला होगा, अभी भी खेलते होंगे. हाँ, अभी नहीं खेल रहे हो तो अच्छा है. सो अब ये गेम खेलते हैं तो किसके लिए खेलते हैं? नो नो नो, एंटरटेनमेंट के लिए. अच्छा ठीक है, एंटरटेनमेंट खेलते हैं, वेरी गुड. अच्छा, पर आपका गोल क्या होता है? वॉट एवर वी प्ले, वॉट इज योर गोल अल्टीमेटली? हाउ वुड यू वांट द गेम टू एंड? विन ना, यू लाइक विनिंग, राइट? कोई भी ऐसा होता है, नो नो आई डोंट वांट टू विन बट आई एम प्लेइंग. व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? जीतना ही नहीं है तो मत खेलो, खत्म. वो दे दो, ओपोनेंट को वॉक ओवर दे दो, बोलो कि हाँ चलो तुम जीत गए. खेलते क्यों हो? नहीं नहीं, पर नो, आई प्ले विद द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. अच्छा, डज स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप से दैट यू शुड नॉट वांट टू विन? Where in spirit of sportsmanship it is said that you should not desire to win? Winning is not the only outcome. This has to be fit into our head. That's all. It is possible that I may lose, yes, but I still play to win. If winning is not understood by us, okay, success. We all want to be successful. हम ये थोड़ी कहते हैं नहीं, आई डोंट वांट टू बी सक्सेसफुल बट स्टिल आई एम डूइंग ऑल द वर्क. व्हाई आर यू डूइंग? सो आई वांट सक्सेस. सक्सेस गिव्स मी हैप्पीनेस. सक्सेस fulfills my effort. At the same time, if I have the understanding that the success may not come to me the way I imagine it to come. Sometimes it may come to me as a lesson. Sometimes it may come to me as the first step of defeat.
वो कभी कभी वो हम ये जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो देर आर सम एग्जाम्स दे आर कॉल्ड प्री बोर्ड्स. So we are preparing ourselves to face board exam. तो प्री बोर्ड्स. अभी कुछ लोग, some students ना, they if they perform very well in pre boards, it is dangerous for those students. Some category of students are such. Why? Because they'll, अरे आता है सब कुछ, बैठ गए. For some students it is important that they underperform, they don't do well in pre boards. तो हाँ, वो जागेंगे. I was on the verge of failing. I can't do that. Now I have to study. This pattern, if somebody observes, then we have to make use of this. मेरे साथ होता था कभी कभी कॉलेज में. Luckily we had 4 exams. 4 exams में 2 unit test होते थे. So there was 1 unit test, then exam, midterm exam, then another unit test, then semester end exams. तो 4 होते थे. तो आई न्यू दैट ये पैटर्न मेरा, माई माइंड वर्क्स लाइक दिस. आई रिकग्नाइज्ड. तो यूनिट टेस्ट एनीवे वाज स्मॉल. लकीली इट वाज प्लेस्ड लाइक दैट. तो यूनिट टेस्ट मेरा परफॉर्मेंस खराब होता था, फिर मैं जाग जाता था. देन मिड टर्म में अच्छा कर लेता था, फिर सोना शुरू हो जाता था, फिर से यूनिट टेस्ट में खराब होता था, फिर फाइनल्स में बहुत अच्छा हो जाता था. तो इट वर्कड टू माई एडवांटेज. So sometimes success comes as failure also. कहने का अर्थ ये कि सक्सेस may not be defined in the way I understand it, but I always want to succeed. In the long run, when I look back and say, हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ था, बहुत अच्छा हो गया, means now I feel I am enjoying that success in whichever way. Socially, financially, physically, emotionally, I want success. A boy proposes to a girl, will you marry me? I am not interested in a yes. Oh, okay. And still you want to go and propose? Yeah, I want to. Liar. Simple ना, ये हम कुछ भी करते हैं, we all do that for success or not. It is just that we need the understanding that there may be an outcome which is different from what I have imagined. That's okay. I should be able to accept it and digest it. That's all. बाकी सक्सेस तो मुझे चाहिए. न कांक्षे विजयम कृष्ण, ये क्या है? हम भी ऐसे ही फिलोसोफाइज करते हैं. वी सडनली बिकम फिलोसोफर्स. वी सडनली से, आई डोंट वांट एनी विक्ट्री, आई डोंट वांट टू विन. न च राज्यम सुखानि च, आई डोंट वांट द किंगडम, आई डोंट वांट एनी ऑफ दीज प्लेजर्स. हो, एंड देन किसको? कृष्ण भगवान को सुना रहा है. किमनो राज्य न गोविंद. हे गोविंद, राज्य में क्या रखा है? What is there in this kingdom? ठीक है. किम भोगैर्जीवितेन वा. What is life? It is only which is only filled with indulgence, sense pleasures. ऐसा जीवन ही क्या जीवन? किम भोगैर्जीवितेन. Don't we also make such statements? We may not say it outside, but अंदर तो कभी-कभी बोलते हैं. इसका एक स्टोरी है. We all know that story. What is it called? Grapes are sour. जब नहीं मिलता है, ऐसे भी खट्टे अंगूर हैं क्या? Suddenly philosophy will come in. सब माया है. It's okay. So तब कुछ. Why? Because I have an inability to accept my situation. I don't want to. There's a dislike. There is some kind of aversion. There is fear. और उसकी वजह से सडनली मैं उसको ग्लोरीफाई करता हूँ. वी ऑल ग्लोरीफाई. कभी वो mother or father say about the children, my son or my daughter, she's so independent in her thinking, very independent.
This is a glorified way of saying she is disobedient. वो बात नहीं मानती है, वो बोलने के लिए उसको एक पैकेज क्या कर दिया, वेरी इंडिपेंडेंट थिंकर, मतलब वो मेरा बात नहीं मानती है, बस उतना बोलने के लिए. we do that. दूसरों के साथ करते, अपने आप के साथ भी करते हैं. तो वी ग्लोरीफाई एवरी छोटा सा वीकनेस होगा, मैं ये सब नहीं करता, इसमें सब. अरे गणपति उत्सव है, हमारे घर आरती है, आप आइए. आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस रिचुअल्स एंड ऑल. ओह देन आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल, ग्लोरीफाइड. उसको थोड़ा बिठाना चाहिए. बोला हाँ चलो, एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज स्पिरिचुअल एंड हाउ आर यू स्पिरिचुअल, प्लीज एक्सप्लेन. ऐसे ही glorification of our weaknesses. Actually, I am lazy, but I will say हम लोग पूजा सब नहीं करते क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं. तो स्पिरिचुअल क्या करते हो वो तो बता दो. वो भी नहीं करते. तो नो रिचुअल, नो स्पिरिचुअल ऑल्सो. तो ये we have to, this see, Arjuna pe, we are not laughing at Arjuna's state. We are trying to understand how Arjuna is sitting in our heart in this manner. Arjun chose Bhagwan as against the entire Narayani Sena. वैसा अर्जुन है हमारे अंदर. Is such an Arjun found in our heart? And on the other side, that same Arjun also is now confounded. That Arjun, am I able to relate to this? And if I'm able to relate to this, then Gita will be effective. So going through Arjuna's journey, because Bhagwan is not saying a word, and deliberately so. He doesn't want Arjuna to stop. He wants Arjun to come face to face with the core problem. And if Bhagwan says this is your problem, he may not accept. अगर कोई हमको बोलता है कि ये आपका प्रॉब्लम है, हम बोलेंगे नहीं नहीं ये क्या, ऐसे यू आर पासिंग जजमेंट्स, यू आर वेरी हाईली ओपिनियनेटेड. हाँ ठीक है, ओके, बट व्हेन आई माई सेल्फ कम with such revelations, then I say, oh yeah, really, that is true. And then some cure is possible. So I have to come out with it. No, कोई भी बोलेगा उससे कुछ नहीं होता मुझे. Even if that person is a greatest well-wisher, greatest friend, तो भी नहीं होता है. इसीलिए what happens is when we grow older, then we say, अरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, हमको सब बताया जाता था, all we had to do is only obey orders, it was so simple, so nice, we didn't have to take difficult decisions, it was so nice. But बचपन में क्या, जब देखो मुझे ये बोलते रहते, वो बोलते रहते हैं, ये मना करते हैं, वो मना करते हैं, this is not, I should have freedom, I should have freedom. And then when freedom comes, then we say, I don't want this freedom, please take it away from me, take it away from me. But if I can do this exercise with myself, then I won't depend on anybody else. I can myself understand कि क्या है, why am I glorifying myself like this? My own weaknesses, why am I glorifying? And not as individuals, even as a society we do this. All our festivals, it has got so diluted nowadays. हम कितने लोग हैं जो अभी जैसे गणेश उत्सव में there are certain sweets that are prepared on Ganesh Chaturthi. There are certain things that are prepared during Diwali. There are certain things that is prepared during Navaratri. How many of us do all this? How many of us prepare? जन्माष्टमी पे कुछ अलग चीज होती है, रामनवमी पे कुछ अलग चीज होती है, उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन कुछ होता है. हम कितने करते हैं वो सब? Easiest is ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया हमने, या कोई करता है केटरिंग का, उसको बोल दिया फोन करके मेरे घर पे भेज दो, ठीक है चलो उतना तो कम से कम, बाकी नहीं, दिस इज हाई फैट,
too much of carbs, in these festivals में ना, I prefer, अरे भैया वो उत्सव तो मना लो, एक खान पान की बात होगी, अदर थिंग्स। सडनली होली पे ही आपको वाटर शॉर्टेज दिखता है, सडनली पूरे साल भर आप कुछ करो, वाटर पार्क बड़े बड़े चलाओगे साल भर, समर में भी चलाओगे आप, पर होली पे वाटर वेस्टेज, पोल्यूशन, वेरी बैड। साल भर योर डेसिबल लेवल विल बी सो हाई, एंड देन सडनली दिवाली everybody will become noise pollution conscious. No crackers. Suddenly air pollution conscious. या तो ऐसा करो, क्रैकर्स बैन कर दो दुनिया भर से। आर वी रेडी टू डू दैट? विच मीन्स 31 दिसंबर को भी नहीं चलने चाहिए। अग्रीड? होता है ऐसे थोड़ी होगा कुछ नहीं होता। 4th जुलाई, देयर आर सो मेनी डेट्स। अरे वेडिंग्स, वेडिंग्स में तो एक फैमिली है ना, दिवाली तो पूरी दुनिया भर में मनाते हैं, वेडिंग तो एक फैमिली, आप क्यों जला रहे हो? But if there are so many ways of thinking about it, but try and find out what is the significance of it. दिवाली पे भी पटाखे जलाने का एक सिग्निफिकेंस है, there is a cultural significance which has scriptural evidence also. So when we, there's पितृ पक्ष, श्राद्ध पक्ष जिसे कहते हैं, तो पितरों को हम आवाहन करते हैं, they are from the higher realms. It is said that they all come to receive our shraddha offerings, and then to help them go back, and their days are longer than our days. So 15 days हो जाने के बाद they have to return, and when they have to return, तो उनको रास्ते में वो लाइट देने का एक सिंबॉलिक वे है कि हम ये उसको उल्का दान कहते हैं, हम ये रॉकेट जलाते हैं, पटाखे वगैरह, and it has various other effects also. So that is not our topic now, but the point is we glorify our own laziness. We can't make all these different sweetmeats and all in our homes. We are not able to celebrate all these festivals in traditional or our family culture manner. We are not able to follow that because we are lazy. And then we say, we glorify, no, I am pollution conscious, I don't like all these things, it's all contributing to the carbon footprint, I don't want to do. हाँ, तो एसी बंद कर दो ना, सारे एसी दुनिया भर से निकाल दो, हाँ, कभी एसी यूज मत करना, और गाड़ी में मत जाना, चल के जाना या बैलगाड़ी में जाना। अग्रीड? कार्बन फुटप्रिंट की इतनी चिंता है तो, हाँ। When it comes to only festivals, we talk about all these things. Never fly then if you are so concerned about carbon footprint. तैर के जाओ अमेरिका, carbon footprint. So the point is, here in this condition of Arjuna of the first chapter, we are able to see certain glimpses of ourselves. We have to be honest enough to relate to this and identify with this Arjuna. Only then, when Bhagavan starts speaking, some bell will ring inside. Otherwise, it will be like, theek hai, very good, very nice. Gita is amazing, very good, very logical. But what has happened to you in your life? Still waiting. I have to become Arjuna to be able to benefit from the Gita. So, यहाँ पर ये glorification also, and justification, making it into philosophizing things. Whenever we catch ourselves doing this, immediately we should wake up and say, there is something wrong in the way I am looking at things. मेरी दृष्टि में गलती है. My vision has to be corrected, not the world. That is very important.
And actually, going forward in the 11th chapter, Arjuna says, Bhagwan, world is right in its place. There is nothing wrong with the world. And we also will have to agree to that. What is wrong in this world? Except us. हम आके सब गड़बड़ करते हैं. Everything is fine in this world. Everything is in its place. Perfect. The day we stop contributing to pollution, pollution-free environment is already there. Did we not experience the first lockdown? 21 days. Just 21 days of our non-interference with nature, nature showed us what she really is. Just 21 days. And people said, oh, we have learnt our lessons. Really? What lessons? And people used to get excited. Big highways and big city crossroads and all. We saw wild animals coming. Oh, so good. So just imagine, who is wild? कौन किससे डरता है? जब real wild animals were in the cage, the so-called wild animals surfaced and came into the cities. As soon as these were let out of the cage, they went to their safe havens कि भैया इनका सामना तो नहीं कर पाएंगे. तो मतलब wild है कौन? If you look at, and we are justifying everything. And we are saying, man is a roof and crown of creation, and man is supposed to make use of all this. No, man is not supposed to make use of all this. Man has to learn to live in harmony with the entire creation. He is not at the center or at the top of creation. He is a part of the creation, a part of the chain. तो environmental issues हो या our cultural issues हो या even our intellectual understanding हो, हमारे scriptures की बात हो, our religious beliefs and rituals हो, everywhere let us stop justifying our weaknesses, glorifying our weaknesses, and let us look at the truth honestly and try to change our vision and not try to change the world or just justify and cover up my weaknesses. This is what Arjuna's state teaches us here. Kim no rajyena govinda, kim bhogair jivitena va. किसको सुना रहे हो? I think next there is a little bit of change of, मतलब हालत तो वही है, but subject matter थोड़ा change हो रहा है. So he is talking about relatives now next. So we'll see that next time. So we have 2 minutes. Anybody has any questions? Guruji, you can explain the thing that you're talking about there. हाँ बताया मैंने अभी. I just said. Like, if you can elaborate. It's just, देखिए, there are lots of one thing that is said is this पटाखे छोड़ना and all is called उल्का दान. उल्का means a comet. तो कॉमेट जैसा लाइट देता है आकाश में, वैसे वी आर ऑफरिंग लाइट टू आवर एंसेस्टर्स so that they can return to their own realms. So it is, Diwali is actually an auspicious way in that manner. There are other legends also where Bhagwan Sri Ramchandra ji returned to Ayodhya on that day. So therefore, on Vijayadashmi day, it is said that he killed Ravana, and Diwali day he was back in Ayodhya. So when he returned, people lit a lot of lamps and welcomed him. So that is another reason. There is also in Bhagavad there is a story of an asura called Narakasura. He had so many different thousands of kings he had imprisoned in an unjust manner, and he was a very unrighteous kind of person. So he had also captured the
mother of the devatas and all these things. So Bhagwan went along with Satyabhama and destroyed him and freed all these kings. And all of them, they celebrated and glorified Bhagwan. So Naraka Chaturdashi is one day before Diwali. And then next day is celebrated as Diwali. So till that time, they were in dark, and then they got light in their lives. So a lot of different uh, significances are there with respect to. We'll do some Nam Sankirtan.